Start. Hello everyone. Good morning everybody. I am Geet from Prostate Wellbeing team. I am sure all of you must be keeping good health. Today we are going to discuss a very important topic, prostate cancer. Prostate cancer is a malignant tumor in the prostate. There are several stages of prostate cancer. Most prostate cancers develop slowly and do not cause any symptoms. Fast growing prostate cancer is less common. The risk of getting a prostate cancer too increases with the age. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment for prostate cancer, today we have with us renowned urologist Dr. Navneet Mishra, MBBS, MS, and MCH Urology, SGPG IMS. He has a rich experience and a hands-on expertise in renal transplant, stone management, endourology, lasers, and urodynamics, along with prostate cancer management and diseases related to prostate. He is currently practicing at the Wilson Medicity, Lucknow. Dr. Navneet Mishra has a rich experience in the field of urology and carries out renal transplants and renal calculi diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that the patient health is in safe hands. So, very warm welcome to you, doctor, and we are honored to have you with us today. Thank you very much. Sir, over to you with the session. But as it is a very common thing that in this society we are often very afraid with the C word, right? And whenever the word cancer comes up, there are a lot of negativity, a lot of stigma, and a lot of doubts usually the people in India has. So I would really kickstart this session with asking you that what exactly and where is the prostate? प्रोस्टेट इज ए ग्लैंड। ये एक ग्लैंड होती है जो पुरुषों में ही पाई जाती है। और इसका जो स्थान होता है वो पेशाब के थैले और पेशाब की नली के बीच में होता है, और पेशाब की थैली को और पेशाब की नली को जोड़ता है। और पेशाब की धार जो है पेशाब के थैले से प्रोस्टेट से होते हुए ही निकलती है। इसका मुख्य काम जो पुरुषों में होता है वो सीमेन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सीमेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड ही बनाता है। और साथ साथ में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पेशेंट को पेशाब करने में समस्या स्टार्ट होती है। तो एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि सामान्यतः अखरोट के आकार की होती है, जो पेशाब से थैले के और पेशाब की नली के बीच में पाई जाती है। Okay, sir. And sir, what exactly is the prostate cancer? प्रोस्टेट कैंसर इज ए टाइप ऑफ ट्यूमर। जब भी ग्लैंड बढ़ती है तो वो दो तरह से बढ़ती है। एक बेनाइन होता है जिसको कहते हैं नॉन कैंसरस या लिमिटेड ग्रोथ होती है, और एक होता है मैलिग्नेंट जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में कैंसर बोलते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। सामान्यतः इसके कोई लक्षण यूजली शुरुआत में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जब भी इसके लक्षण आते हैं तो यूजली ये एडवांस स्टेज में होता है। ओके सर, और ये कितना कॉमन है इन इंडिया और इन नॉर्मल पीपल? हाउ कॉमन इज दिस डिजीज? वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये डिजीज काफी कॉमन है, पर काफी लोगों में ये पता नहीं चलता है क्योंकि यूजली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। पर फिर भी देखा जाए तो करीब अगर 2030 तक हम लोग एस्टिमेट करें तो अप्रॉक्स 17 लाख पीपल इस डिजीज की वजह से जो है डेथ होती है 17 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड। सो इट इज मोर कॉमन, we cannot estimate the actual strength because of lack of public awareness and lack of symptoms of this disease. Okay. And sir, like everything depends on a cause. So, iska main karan ya cause, what would you say? What are the cause of this cancer? इफ एग्जैक्टली हम लोग कॉज के बारे में बात करें तो अभी तक ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है। पर हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जिन लोगों में ये कैंसर होने के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ओल्ड एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। पेशेंट की एज जितनी ज्यादा होगी उसको प्रोस्टेट कैंसर होने के रिस्क उतने ज्यादा हो जाते हैं। 60 साल के ऊपर ही मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट 60 साल के ऊपर ही होते हैं। दूसरा, एक अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन होती है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर रिस्क बहुत हाई होता है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है, या इसकी वजह से कई बार पेशेंट अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज, दूसरा है रेस,
इन दोनों के अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि एनिमल प्रोटीन हाई लेने से, यानी नॉन वेजिटेरियन डाइट हाई लेने से कुछ लोगों में इंसिडेंस पाया गया है, पर ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। राइट सर, जैसे कि ये डिजीज स्पेशली इट इज जस्ट टू द मेन, सो आर सम men more likely to be diagnosed with the prostate cancer? There is a certain limit that some men could be more likely to the disease, more likely to be prone. हाँ, एक रिस्क फैक्टर जो और होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इफ देयर इज ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, या किसी के पिताजी को या भाई को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने की। इसके अलावा एज, और एक जो अफ्रीको अमेरिकन रेस होता है, ये तीन चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। Okay. And sir, for what are the symptoms of prostate cancer? Because right now इस subject पे हम हैं, और जब हम इस बारे में लोगों को aware कर रहे हैं, तो कई सारे communities, कई सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उनको मालूम ही नहीं चलता है that exactly what is the disease. So can you please guide us exactly what are the symptoms of the prostate cancer? अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो इस डिजीज की अवेयरनेस की और इसीलिए ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्टेट कैंसर एसिम्टोमेटिक होता है अपने इनिशियल स्टेज में, जबकि हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें उसी टाइम उसको डायग्नोस करने की। इसलिए इस डिजीज के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, पर जब सिम्टम्स आते हैं तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरिनरी सिम्टम्स, जिसको कहते हैं जैसे अर्जेंसी, यानी बहुत तेजी से पेशाब लगना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब की धार का कमजोर हो जाना, पेशाब के रास्ते से खून आना, या पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना, या जब एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर पहुंच जाता है तो बैक पेन, क्योंकि डिजीज बोन्स में पहुंच जाती है तो बैक पेन होता है, हिप पेन होता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी कंप्लेंट करते हैं। तो ज्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, पर अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो हमें अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और इवेलुएट करवाना चाहिए। ओके सर। और सर, क्या कोई अदर कंडीशंस हैं जिसके सिमिलर सिम्टम्स होते हैं लाइक प्रोस्टेट कैंसर? बिल्कुल, हमने पहले ही बताया कि दो तरह से प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है। एक बेनाइन इन्लार्जमेंट होता है जो कैंसर नहीं है, जो कि ज्यादातर सिम्टम्स वो पहले कॉज करता है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो या तो ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, जिसको बीपीएच कहते हैं, या फिर ये मैलिग्नेंट कैंसर की वजह से होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। समटाइम्स ऐसे लक्षण यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज में भी मिलते हैं, जिसमें हमारी पेशाब की नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें कभी सकरापन आ जाए, तो ऐसे लक्षण की बात, पेशाब की धार कमजोर होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, या पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, ऐसे सिम्टम्स उसमें भी आते हैं। इसलिए ऐसे सिम्टम्स आने पे हमें अपने डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। ओके सर, एनी टेक अवे मैसेज बिफोर हम अपने व्यूअर्स से कोई क्वेश्चंस लें, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट काफी सारे लोगों को अभी अभी रिसेंटली इस डिजीज के बारे में पता चल रहा है, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू टेक देयर पर्सनल केयर, एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बीच हमारे साथ आज होंगे। बट एनी टेक अवे मैसेज टू आवर व्यूअर्स बिफोर वी स्विच ऑन टू द क्वेश्चंस, कि क्या एक ऐसा सेल्फ हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं, अवेयरनेस के थ्रू हम क्या मेंटेन कर सकते हैं सो दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिजीज? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस तो ऐसे किसी तरह से रोकना मुश्किल है, क्योंकि हमने पहले भी रिस्क फैक्टर बताया, एज होता है, एज आप रोक नहीं सकते हैं। जो है रेस है, अफ्रीकन अमेरिकन रेस है, वो आप रोक नहीं सकते हैं। एक फैमिली हिस्ट्री है, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट, जो कि बहुत ज्यादा अभी उससे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोस्टेट कैंसर को आप रोक नहीं सकते हैं, पर एक मैसेज मैं ऑडियंस को ये जरूर देना चाहूंगा कि जब भी पेशेंट या आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए, तो आपको जो है प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक बार स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, जो कि सीधे सीधे सीरम पीएसए लेवल से बहुत ही इजीली किया जा सकता है। उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, सीरम पीएसए से उसकी टेस्ट करते हैं, और उसकी स्क्रीनिंग आराम से हो जाती है। तो ऐसे कभी कोई लक्षण आए या लक्षण ना भी आए, अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपने प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग टाइमली करवाते रहिए, जिससे ये डिजीज जल्द से जल्द हमें पता चल जाएगी और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। एंड सर, डू फैमिली हिस्ट्री हैज अ से इन दिस, कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोस्टेट कैंसर, सो मे बी देयर चाइल्ड कैन हैव द सेम इशू?
Yes, this is associated with sometimes some genes may cause prostate cancer, and it is associated with family history. So if father is having the prostate cancer, then there may be a chance in the children that they develop prostate cancer, but not before the age of 40 or 50. They will develop after the 40 or 50, and there is a risk, not exactly or confirmation. It is not a confirmation that they surely develop, but there is a more risk than normal population. So they should be undergo screening after 40 or 50 years of age. They should be undergo screening so that they can be diagnosed easily and early in the initial stage of the disease. यस सर, जैसे कि आपने बताया दैट दे शुड गो थ्रू स्क्रीनिंग्स, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया था दैट दिस इज सच अ कैंसर दैट डेवलप्स वेरी स्लोली. तो इज द इनिशियल सिम्टम्स एंड द लेटर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज डिफर्स, कि पहले से ही सर जो आपने सिम्टम्स मेंशन किए दैट स्टार्ट्स, सो हाउ इज इट डिफरेंट? Usually, if any patient or anyone having prostate cancer, usually they are asymptomatic. They will not develop any symptoms. But if there are any symptoms and it is diagnosed as prostate cancer, then most likely it is in the advanced stage. Because until unless prostate getting more advanced, it will not cause any symptoms. यानी जब भी आपको लक्षण आते हैं, अगर आपने पहले से नहीं स्क्रीनिंग कराया, आपको लक्षण आते हैं और वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हैं, तो वो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो एक एडवांस स्टेज में हो गया होगा. इसलिए जो है आपको पहले से ही स्क्रीनिंग कराना बहुत फायदेमंद होगा. Okay. So thank you so much for this brief and detailed information all about prostate cancer, and I hope it is spreading awareness. And I would ask the viewers and the participants, do we have any more questions, any more doubts related to prostate cancer? Because as doctor mentioned that this is a disease which definitely needs more awareness and more talk. क्योंकि जिस चीज के बारे में हम जितना बात करेंगे, आई गेस उतनी ज्यादा अवेयरनेस, उतनी ज़्यादा information, I'm pretty sure we would be able to spread. So if you have any more questions, we need to ask anything to the doctor. We have Dr. Navneet Mishra here on board who is telling things very profoundly, and he's helping us battling this stigma, this disease in a very, very systematic manner, that how do we deal with it. So we have the question, our viewer is asking, is prostate cancer hereditary? Yes, मैंने पहले ही ये चीज बताई कि फैमिली हिस्ट्री अगर है तो देयर इज अ हायर रिस्क बिकॉज some few variants of prostate cancer is carried by certain amount types of genes. So obviously there is a hereditary correlation with the prostate cancer. Because if your father or your brother have a kind of prostate cancer in the past, so you have to be you have to take more precautions and should undergo screening after 50 years of age regularly. Sure. So I guess, so this is that, like that method. I think whenever the child, like the father has the disease, they definitely should confront it to the family, and definitely it can be a hereditary thing. So, जैसे कि सर ने बोला, screening is a must thing. We have up next question from our viewer Abhishek. What are the side effects of surgery for prostate cancer? So, is there any side effect? Yes, if we talk about the prostate cancer surgery, in this surgery we remove whole of the prostate. We called in our own language is radical prostatectomy. So we remove the whole of the prostate gland and we connect the bladder directly to the urethra. So during surgery, there may be risk of injury to the muscles controlling your urination, controlling of urination. So there is a risk of incontinence, that you cannot control urine after prostate surgery, or sometimes after surgery there may be a risk of stricture urethra, that there is narrowing of urethra, so you have poor flow. And other thing is like most important, we can talk about sexual dysfunction. After prostate surgery, there is a high risk of erectile dysfunction and ejaculatory dysfunction. So we have to keep in mind, and we already explained these type of complications to the patients. And other is recurrence of prostate cancer. Sometimes if, after removing prostate gland,
very few person develop again at the same site, so it is recurrence. So most important risk is erectile dysfunction, ejaculatory dysfunction, and in urinary incontinence and stricture urethra, that is poor flow. Okay, sir. And one more viewer has a question about the side effects, but that is all about radiation therapy for prostate cancer. So, what are the side effects of radiation therapy for prostate cancer? In radiation therapy, we give radiation in the area of the pelvis where the prostate lies. But there are adjacent organs also get affected by the radiation therapy, like your bladder and your pelvic organ, other like rectum. So you can complain of radiation cystitis or small capacity bladder, or very frequent urination, very urgency, frequency, and problem in defecation. You can complain of constipation, diarrhea. These type of symptoms are more in after radiation therapy. Sometimes lymph nodes also affected, so we can see in some patient like lymphedema, that is swelling around the in the lower limbs. So these are all side effects of radiation therapy. Thank you, sir, for detailing it, all the side effects and everything in such a detailed manner. Any other questions, if our viewers have, they definitely can ask, sir. और जैसे कि मैंने आपको बताया that this disease has a very less awareness right now, and as much as we talk, as much as we solve issues and queries for the same, it will be helpful for all of us to know more about it and take the actions, take the following steps related to prostate cancer today and every day, that with each passing day more and more information and more results to the problem will definitely occur. So this is my question to you. In India, how much is this disease getting resolved and how much help we are able to deliver to the patients? Right now, we are developing, and in this more awareness are spreading throughout the population. So now we are going to diagnose more and more prostate cancer at the early stage. Initially, it was usually diagnosed at the later stage when prostate cancer get spread to the other organs, and there are very less options for treatment. But now it is diagnosed in early stages, and we have developed very modern treatment therapies, like we know about radical prostatectomy surgery. We know about hormonal therapy that directly work on the hormones testosterone, which help in uh, increasing the prostate cancer. And after that, radiation therapy is there. Some immunotherapy has also been developed for the treatment of prostate cancer. So we are advancing in the treatment of the prostate cancer day by day, and India more and more population now getting treatment for the prostate cancer. Okay. So what support resources are available for prostate cancer and their families is one question which again one of our viewers is asking, that what are the support resources What are the resources for what? for available for prostate cancer nowadays and their families, as this is such a disease which definitely is takes a toll on the health, mental health, especially for the families. So is there any resource or support present right now with us for their families? In case of if there is any prostate cancer in the family, so you have many hospitals, cancer hospitals, many clinics for prostate cancer, many awareness program for prostate cancer. You can take help from those and get screened by their programs or in the hospitals very easily. You can go any hospital and you can meet with the doctor and ask them to screen for your prostate cancer, and they will do a simple digital rectal examination and one blood test that is known as serum PSA, and they will clearly said that you are free of prostate cancer. So it is resources are available all around, especially in the cities. We Right. cannot talk about the villages, but in the cities it is very easily available. You can go under screening anytime, anywhere in the cities. Definitely, sir, definitely. And as you mentioned about the cities and the villages, one sudden question pops up in my mind that definitely the cities are doing great and trying to develop and implement everything in terms of resources. But what about the villages, sir? Do we have a like a
plan for the villages, or we are trying to influence and aware people there, or sessions like this will help everybody to gain knowledge? What do you think? What is your opinion on it? Definitely, definitely we have to spread awareness about this disease in the most importantly in the villages and lesser developed areas, because they need to know more, and they need to they need to know that this cancer is very slow growing cancer, and if we diagnose it timely, then a complete treatment is possible. So we have to do awareness in, especially in the villages and lower grade cities, because most of the time these people which are not aware getting the disease in the advanced stage. So it is important, and we should work on them to spread the awareness in the villages and the smaller cities. Definitely, sir, definitely, as you said. And I'm pretty sure many doubts and many stigmas, many queries about prostate cancer has been solved today with this live session. And any more questions, any more queries, you can definitely ask, sir. We have a doctor on board to solve all your issues, all your queries, and definitely the screenings. And as sir mentioned, that every small step leads in a big way, that we should monitor and check for our personal selves that how we are doing about the same. So, sir, thank you so much for coming on board and with such a detailed description of everything you explained all of us, the seriousness of the disease. Sir, any other takeaway message you would want to give all the participants, all the viewers who are here on board listening to you today? Any specific message from your end? Because definitely, as you are a person who has expertise in the same, I definitely believe everybody would follow the path. मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर में कैंसर से घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बहुत फॉर्चुनेटली बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पेशेंट को आज प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है, वो भी एडवांस स्टेज में, तो भी इसकी इतनी दवाएं हैं कि पेशेंट की एज अपने आप 8 से 10 साल बढ़ जाती है। और अगर इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है ये कैंसर, तो पेशेंट की लाइफ कभी भी प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं जाती है, हमेशा ही किसी और डिजीज की, मतलब एज ए ओल्ड एज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक कार्डियक एंड पल्मोनरी, उसकी वजह से जाती है। सो most importantly, we have to diagnose it early as possible, and for that we have to undergo screening after 50 years of age. That is the take home message from me. If after 50 years of age, every person should have to go under the prostate cancer screening, and इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक अपने डॉक्टर के पास जाना है, एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है जिसे हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको सीरम पीएसए कहते हैं। सब कुछ बस इतना है, बस ये दो टेस्ट है, आपकी चीजें क्लियर है कि आपको है या नहीं है, और जितनी जल्दी आपको पता चलता है इसका ट्रीटमेंट उतना अच्छा। Definitely, sir. Thank you, Dr. Navneet Mishra, for your valuable time. And it has been quite an informative session for our viewers. And we definitely look forward for many more such sessions in the coming future, in the coming time. Thank you, viewers, for your excellent participation. And for more information and updates, stay tuned, stay connected on our Facebook page, Prostate Wellbeing. And we are also available on YouTube, Twitter, and